अहम खबर के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेम वर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। ये पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहीत शराकत की मजबूती की अक्कास है। फ्रेम वर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। फ्रेम वर्क की तकमील के लिए तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का अयादा। फ्रेम वर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिजली की तरसील के मंसूबे के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के इन अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल के इन दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। आर्मी चीफ की फाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वकार में इजाफे का बायस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशक्कुस के साथ उभर रहा है। रियाद में जारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं Crown Prince Mohammed bin Salman for this wonderful event, which symbolizes his leadership and his vision to transform societies like he has done in Saudi Arabia. I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our inception, 78 years, we have made, to be very honest, mistakes, and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. That's what we are doing. And at this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution, has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. But then, Rome was not built overnight. We are undertaking industrial reforms. We have a youth bulge. 60% of our population is very young, and in Chinese parlance, it's a challenge as well as opportunity. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. While we are doing all this, we are an agrarian economy. My friend, ladies and gentlemen sitting here, Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change, and for no rhyme or reason, no fault of ours, our emission is less than a fraction of 1%. And yet, in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. And we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Large swaths of our land was underwater. Crops were destroyed. Millions of houses were destroyed. And then we have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless.
And we have to, it's like going up the ladder and then you come back down, going up the ladder and then come back down. This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard, we are working hard, we are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity to come to the rescue of suffering humanity. Otherwise, this lopsided system will provide devastating results. Therefore, I would like to say that if humanity has to move forward, it has to move forward in unison, share its bounties and grievances together, move forward and share modern technologies with those countries which can use those technologies and grow their production, whether it's agriculture, industry, etc., and employment. This is how I feel, but all said and done, we are resolved by the grace of God. We will turn Pakistan as one of the most going countries through hard work and untiring efforts, collecting our youth, our natural resources and our strength, putting them together and make our country stand in the community of nations like a very honorable country. Thank you for your passion, Prime Minister. Short answer to my short question. To be sure that your citizens are convinced that you are going in the right direction in terms of technology and AI, because everyone and the young generation are obsessed now by technology and AI. What are you doing in terms of global cooperation and also what you are doing on technology to be sure that the young generation will benefit from this new trend of AI technology to be inclusive? You are a great tech nation. Yeah, very good question. I think Pakistan is already set and we are moving speedily towards technology and AI. Now, AI, ladies and gentlemen, we must all understand, has its huge benefits and also disadvantages. I think the global north should come and sit on the table, who have already achieved a lot of progress in AI, that how AI technology can best be used to make it productive, make it very positive, and have synergy between global north and global south. For example, agriculture. If we deploy AI technology in agriculture, a country like Pakistan and those representing global south countries, this agricultural economy will be completely transformed. Similarly, in industry. And we are, at the moment, training our youth with AI, with technology, with IT, and using whatever means we have at our disposal, but to create hubs, to create data centers, require huge investment. And therefore, global north and global south should sit down and come to an agreement whereby we should have equitable distribution of resources, to have egalitarian economy, I mean, for the north and for the south. This is how we have to have shared destiny. Otherwise, I don't think we will be able to do justice to ourselves and to the entire global village. Prime Minister Rama. ब्रेक के बाद आपको बताएं, अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। जापान में ताजरीन से खिताब में कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई है। आज तक किसी सदर ने इतनी तादाद में जंगें नहीं रुकवाई। मशरक़ वस्ता में 2 साल से जारी जंग रुकवाई। और अब खबर खेल के मैदान से। T20 स्क्वाड से क्यों हटाया गया, वजह बताई जाए। मोहम्मद रिजवान का सवाल। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए। T20 स्क्वाड से क्यों हटाया गया, वजह बताई जाए।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सादिक के वक्त आसमान पर रंगीन रोशनियों का अनोखा नज़ारा। रोशनी चंद मिनट तक फ़ज़ा में वाज़े तौर पर दिखाई देती रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेंटिकुलर बादल साकन अदसे या लेंस की शक्ल के बादल होते हैं। ये बादल आमतौर पर पहाड़ों पर हवा की मुखालिफ सिमत में बनते हैं। मुस्तहकम और नम हवा जब पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है तो लेंटिकुलर बादल बनते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सादिक के वक्त आसमान पर रंगीन रोशनियों का अनोखा नज़ारा देखा गया। लेंटिकुलर बादल साकन अदसे या लेंस की शक्ल के बादल होते हैं। ये बादल आमतौर पर पहाड़ों पर हवा की मुखालिफ सिमत में बनते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अडयाला जेल से वापसी पर यूट्यूबर्स और कारकुन लड़ पड़े। यूट्यूबर और कारकुन ने एक दूसरे को मुक्के मारे। यूट्यूबर ने सोहेल आफरीदी से मिलने की कोशिश की, कारकुन से उलझ पड़ा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अडयाला जेल से वापसी पर यूट्यूबर और कारकुन लड़ पड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोर्ट कमांडर पेशावर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए थे। दोहा मुज़ाकरात पर असम्बली फ्लोर पर मेरी तकरीर मौजूद है। सूबाई हुकूमत को मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी बहरान दुनिया देख रही है। जी कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट, तो उनसे मुलाकात हुई है। देखिए जी, वो मुबारकबाद के लिए आए थे, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी मुआशी ताउन के लिए इत्तफाक मुस्बत समत कदम है। दिफाई मुआहदे के बाद इक़्तिसादी और मुआशी मैदान में कामयाबी पाकिस्तान के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। सऊदी अरब के वली-अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान जो मुलाकात हुई, उसके बाद जो आज पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, वो इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं और जो दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, उसके बाद अब इक़्तिसादी और मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब बाहमी मरबूत इत्तेहाद और मैकेनिज्म से आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया का एक और प्रोपोगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट मुआहिदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। वजारत इत्तलात और ISPR के दफ्तर खारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायद का ऐलान कभी नहीं किया। फर्स्ट पोस्ट ने सहाफती असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी अखबार के जुमले सियाको सबाक से हटकर पेश किए हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया के एक और प्रोपोगेंडा साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट ने मुआहिदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। वजारत इत्तलात ISPR और दफ्तर खारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायद का ऐलान कभी नहीं किया है। फर्स्ट पोस्ट ने सहाफती असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी अखबार के जुमले सियाको सबाक से हटकर पेश किए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।